तो आज से आपका इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। अब देखो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर में अगर आप फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं। मैं उन फैक्ट्स के पीछे नहीं भागने वाला कि नदी की लंबाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, वो सब चीजें आप एक किताब के अंदर में पढ़ लेना, कहीं से भी उठा लेना। ठीक है, हम लोग केवल यहाँ पे क्लास के अंदर में कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब इसके अंदर में आपको करना क्या है, इसके अंदर में हम अलग अलग पार्ट के अंदर में इंडियन ज्योग्राफी को डिवाइड कर लेते हैं। एक तो इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर में जैसे हमने आपको बताया फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और इसके अंदर में अगर हम देखें तो इसके अंदर में आपको क्या पढ़ना है, इंडिया की फिजियोग्राफी आपको देखनी है। फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी का मतलब जो इंडिया का स्ट्रक्चरल इश्यूज है या स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी आपको देखनी है फिजियोग्राफी के अंदर में। दूसरा आप बेटा जरा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है तो बाद में उतार लेना। ओके, दूसरा आपको फिर जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे होते हैं तो दूसरा आपको इंडिया का क्लाइमेट, क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करना है, क्लाइमेट जो है उसके बारे में डिस्कस करना है। और तीसरा आपको जो डिस्कस करना होगा उसके अंदर में ड्रेनेज के बारे में। ये एक्चुअली ये तीन टॉपिक मिला के आपके इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसी फिजियोग्राफी के अंदर में हम रॉक स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, इंडिया का रॉक टाइप्स कौन कौन सी है, इंडिया की जियोलॉजी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया जो है वो भी हम पूरा देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस तरीके की रॉक्स जो होती हैं वो हमें मिलती हैं और उन रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। रॉक्स इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे हमें मिनरल्स के बारे में पता चलता है कि व्हाई अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ मिनरल इज फाउंड एट अ प्लेसेस व्हिच आर वेयर वी फाउंड देम। ओके, so that is very important to understand the geology, that you will understand only when you are able to understand the geology of the India. Okay, so we will start with the physiography today and we will start with some basic concepts कि इंडिया का प्रेजेंट में कौन सा एंड पॉइंट है, कौन सा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, ये एक बेसिक स्टार्ट है दैट विल टेक हार्डली 10 to 15 minutes. Okay, and then we will move towards the physiography of India. Okay, now after completing this physical geography we will move towards the human and economic geography. Okay, now in that we will discuss about the soil types, we will discuss about the soil types of India. Okay, soil types and also the biogeography associated with this soil types. Okay, that we will discuss, and then we will go move towards the agriculture. Agriculture के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, we will discuss about the agriculture. Okay, we will discuss about the industry. इंडस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, we will also discuss about industry and their locational factors that we will discuss, and then we will discuss about minerals, different minerals that we found into the India, in India different types of the minerals हम लोग डिस्कस करेंगे, and after discussing about the minerals we will discuss about the transportation, transport के बारे में we will discuss about the transport, different types of the transport, what are the problems associated with them, and then we will discuss about the population. Okay, human geography के अंदर में we will discuss about the population distribution, density issues. Okay, increase in population, we will discuss about the different theories associated with the demographic transitions. Okay, so that also we will discuss about the population. Okay, and then we will discuss about the cultural geography, that is about the races and the languages. Okay, different races that we have, races and the languages in India, races and language, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. नाउ अब जैसे इंडस्ट्री के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना तो वी विल टेक द डिस्कशन ऑफ द इंडस्ट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होल वर्ल्ड. Okay, our focus will be India, but we will discuss the industrial aspects in the context of the whole world. Okay, for example, if we talk about the iron ore industries are there. Okay, iron and steel industries. So we will see where we have locations of iron and steel industries throughout the globe, and then we will come back to the India. Okay, similarly about the mineral distribution, we will look to the mineral distribution. Okay, we will also discuss about the mineral distribution. Now before going for this mineral distribution, we will also have a concept of a resource. Resource का concept क्या होता है? We will also discuss about the concept of a resource, types of the resources, okay, and the various resources that we have. Now in the context of the drainage, we will discuss about the water resources also. Okay, about the water resources also that we will discuss. Now along with the minerals, we will also discuss about the energy resources. Okay, different types of the energy resources that we have,
in our country that we will discuss. Because in your GS1 syllabus, there is a topic related to the resources. Okay, so we will discuss all those concepts of a resource in the context of Indian geography. Okay, so let's start with the physiography. We will start with the physiography. है रेसेस लैंग्वेज, ओके, रेसेस के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, ये सारे टॉपिक आपके इंडियन ज्योग्राफी के हैं. ओके, इट विल टेक अराउंड 40 to 45 hours for me to get it done. Okay, so for the another 15 to 20 days we will be having this Indian geography class. Okay, now it's a highly conceptual because the physiography part is highly conceptual. फैक्चुअल डिटेल्स बेटा बहुत हैं इसके अंदर में. ओके, मैं बीच बीच में जो वैसे फैक्ट्स हैं ना, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा. लेकिन ये है कि वो सब नहीं कराऊंगा मैं आपको कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी है, कंचनजंगा की ऊंचाई इतनी है, ये सब नहीं कराऊंगा मैं. ठीक है, वो सब नहीं पढ़ाऊंगा मैं. वो सब आप 20 रुपए की किताब मिलेगी वहां पे उसमें, या फिर वो मुखर्जी नगर में बहुत सारे टीचर बैठे हुए हैं पढ़ाने वाले, ध्यान से देखिए. ठीक है, तो बहुत सारे बैठे हुए हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजियोग्राफी. ओके, नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर में पहले थोड़े से कुछ ट्राइबल फैक्ट्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द फिजियोग्राफी. ओके, वी विल मूव टुवर्ड्स द फिजियोग्राफी. ओके, अब देखो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का ये मैप तो आप लोग जानते ही हैं, और बना सकते हैं आप में से कोई मैप्स बन जाएगा मानस तुम्हारा? अच्छे से नहीं बनता है. ओके, तुम कितने जने ऐसे हैं क्लास में जो मैप बना सकते हैं इंडिया का? आप बना सकते हो? चलो जल्दी से बना के दिखाओ. बनाओ जल्दी से. नहीं बनेगा? आप पहले नीचे का बना सकते हो, ऊपर का बना सकते हो. ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड. पहले मेरे हिसाब से सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ वाला बनाओ, वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए. इतना भी बना लेते हो तो भी काम चल जाता है. ठीक है बेटा, आप बना सकते हो इंडिया का मैप. अगर इतना भी बना लेते हो तो भी आपका इंडियन ज्योग्राफी के अंदर में काम चल जाता है. ठीक है, थोड़ा सा बस ऊपर नीचे थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है. ओके, तुम्हारा क्या पोजीशन है? बहुत कैड़ा पेनिनसुला बना लेता है तू, है कैड़ा. वो पेनिनसुला तो वैसे भी कैड़ा ही है, सारा सारा का सारा रॉक एरिया ही तो है पेनिनसुला, तो उसको और कितना कैड़ा बनाएगा तो. ओके, चलो अब इसके अंदर में दो तीन चीजें हैं जो ओके ओके, आगे लिखिएगा. इसके अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया का जो आपको मेनलैंड का लैटिट्यूड है, मेनलैंड का जो लैटिट्यूड है, सदर्न लैटिट्यूड, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा मेनलैंड का, दैट इज कन्याकुमारी. ओके, और वो कौन से लैटिट्यूड पर आता है? द एक्सटेंट ऑफ द इंडिया. पहले आप हेडिंग डालो, द एक्सटेंट ऑफ द इंडिया, इंडियाज मेनलैंड इज फ्रॉम, द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज मेनलैंड इज फ्रॉम India's mainland is from 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute north. 37 degree 6 minute north. Okay, 37 degree 6 minute north. Okay, लिखिएगा from west to east it is वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है हमारा? 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 68 डिग्री 7 मिनट. एंड ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इज
97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। अब मुझे बताओ इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? अगर हम यहां से अगर हम लेते हैं तो इनमें हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है? ऑलमोस्ट 30 का आ रहा है, 31 का, 30 का लगभग का आएगा, और 1 डिग्री का मतलब 111। ओके, और इसी तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ लेंगे तो ये भी लगभग 30 का आता है, तो 111 का एक मल्टीप्लाई करके नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस और ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस जो हो सकता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ लिखिएगा द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज किबिथु। इस जगह का नाम है किबिथु, किबिथु। द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज किबिथु, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज किबिथु इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, किबिथु, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज किबिथु in Arunachal Pradesh. Okay, and westernmost point is, कौन सा है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कच्छ का? पोरबंदर कहां जा रहा है? बंदर ही बन जाएगा तेरा। गुहार मोती, गुहार मोती, गुहार GUHARMOTI, गुहार मोती। ओके, ये कच्छ में आता है। ओके, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है हमारा? इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। कोल मीन्स पास। ओके, कोल इज अ माउंटेन पास एंड इंदिरा कोल। एंड मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? मेनलैंड का कन्याकुमारी, मेनलैंड का, मेनलैंड का बेटा। हाँ, केप कॉमोरिन और कन्याकुमारी बात वही है, ठीक है, कन्याकुमारी। एंड वो अंग्रेजों का था, हम तो अपना कन्याकुमारी बोलेंगे ना। ओके, एंड आप लिखिएगा मेनलैंड का कौन सा है? केप कैमोरिन या कन्याकुमारी। और लिखिएगा इंडियन बाउंड्री का सदर्न पॉइंट, इंडियन टेरिटरी का सदर्न पॉइंट आप लिखिएगा इंदिरा पॉइंट। तो क्या हो गया, अभी हम मानेंगे? डूबी भी तो बहुत सारी चीजें हैं हमारी। अब फिलहाल तो अभी इंदिरा पॉइंट ही रहेगा, ये माना जा रहा है कि सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो दैट इज इंदिरा पॉइंट। अभी जब तक किताबों में चेंज नहीं होता तब तक इंदिरा पॉइंट ही लेके चलो, जब तक सरकार मान रही है, जब तक सरकार मान रही है तब तक आप लेके चलो उसे। ओके, क्योंकि जिस दिन हम इस पर क्लेम अपना खत्म करें, हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट अब ये हो गया, तब हमारा क्लेम ही खत्म हो जाएगा ना उस रीजन के अंदर में। तो दैट इज व्हाई वी टेक इट टू बी एज अ इंदिरा पॉइंट। ओके, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कौन कौन से सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है? गुजरात। और गुजरात के बाद किसकी है? आंध्र प्रदेश। गुजरात, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, और फिर उसके बाद तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र। वेरी गुड, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र एंड देन केरला। कर्नाटका कम है, हाँ, तमिलनाडु उसके बाद केरला। ओके, पहले आ जाएगा गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र और फिर केरला। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती, गुहार मोती। ओके, और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है? नहीं, डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा हूं मैं आपसे। यूपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है? मेरठ बोल दे। वेरी गुड, कच्छ। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ है। एंड आफ्टर द कच्छ, वो ना 3 इडियट का डायलॉग, नोबडी नोज सेकंड। पहला बंदा कौन था चांद पे वाला? एंड हु वाज द सेकंड? नोबडी नोज, है ना 3 इडियट में एक डायलॉग वो। ओके, सो सेकंड इज लेह, लेह। ओके, फिर उसके बाद थर्ड में जैसलमेर, फिर बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर कहां पर है? बाड़मेर, वेरी गुड, बाड़मेर राजस्थान में। ओके, और जैसलमेर भी राजस्थान का। ओके, एंड देन यू हैव
बीकानेर, बीकानेर, ओके। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा माहे, माहे, माहे कौन से स्टेट में आता है? नहीं, पौंडीच, कराईकल, माहे, यानम, लेकिन सारी एक जगह है थोड़ी, कोई माहे तो किसी दूसरी तरफ आता है। माहे तो आपका अरेबियन सी साइड पे आता है ना, केरला के अंदर में आएगा माहे। ओके। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है बच्चों? हाँ, लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान, ओके। और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन यूपी, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन यूपी। राजस्थान सबसे बड़ा, राजस्थान के बाद? राजस्थान के बाद कौन सा स्टेट है सबसे बड़ा? एमपी, एमपी आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर यूपी आएगा, ओके। चलिए, अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? व्हाट इज द 10 डिग्री चैनल? अंडमान, बिटवीन अंडमान एंड निकोबार इंपॉर्टेंट वाटर चैनल इज 10 डिग्री चैनल, ओके। और बिटवीन मिनिकोय एंड मालदीव 8 डिग्री, बिटवीन मिनिकोय एंड मालदीव 8 डिग्री चैनल, बिटवीन मिनिकोय एंड मालदीव दैट इज 8 डिग्री चैनल, ओके। बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका पाक स्ट्रेट, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, पता है ना? ये तो पॉइंट सारे बातें पता है ना तुम लोगों को, ओके। लार्जेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हैं हम? लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर इज विद बांग्लादेश, हमारा भाई बांग्लादेश। भाई बोलना पड़ेगा, मैं अब क्या? बांग्लादेश। और कौन कौन से, चलो अब ये बता दो, कौन कौन से स्टेट हमारे बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ? बस, बस केवल वेस्ट बंगाल? हाँ, असम हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय, मेघालय का मेघालय की तो शेयर नहीं होगी, मेघालय की कहां होगी? असम आ जाएगा बीच में, है? मेघालय भी आ जाएगा, है? अरुणाचल कहां से आ जाएगा? अरुणाचल भी शेयर करा, हाँ। नहीं बेटा, मेरे हिसाब से तो वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा दिखा रहा है, एक मिनट। ओके, और आप लिखिएगा इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना, इसके बाद लार्जेस्ट बाउंड्री इसके बाद है, फिर इसके बाद किसके साथ शेयर करते हैं हम? चाइना के साथ, चाइना के साथ, और फिर उसके बाद किसके साथ शेयर करते हैं हम? पाकिस्तान के साथ, ओके। पाकिस्तान के साथ, और फिर उसके बाद किसके साथ शेयर करते हैं हम? नेपाल के साथ। उसके बाद भूटान नहीं यार, म्यांमार होगा, म्यांमार होगा, म्यांमार के साथ शेयर करते हैं। फिर म्यांमार के बाद भूटान, अब भूटान बोल दो, ठीक है। और कौन सा होगा? फिर उसके बाद किसके साथ शेयर करते हैं? अफगानिस्तान, बहुत जरा सा है वो, एक्चुअली हमारे कंट्रोल में नहीं है एरिया, लेकिन फिर भी हम बोलते तो हैं कि हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो खैबर पास का जो एरिया है ना, तो वो बोलते हैं हम उसे, लेकिन वो अभी पीओके में आता है वो एरिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर,
ओके, जिसको वो लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। ओके, सो अब एक क्वेश्चन का जवाब मुझे लिख के बताओ, व्हाई इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री? व्हाई इंडिया इज कॉल्ड टू बी एज अ ट्रॉपिकल कंट्री? इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री और नॉट? नहीं, generally it is to be called as a tropical climate, okay, consisting of tropical climate and having a tropical characteristics, okay, because most of the part of the India is having a tropical characteristics. So although latitudinally it lies, the half part of the country lies into a subtropical belt, but still in practical sense we see a tropical characteristics into the part of the India. Okay, so India is a tropical country. Okay, because although you can say that the area to the north of the Tropic of Cancer, area that is north to the Tropic of Cancer is twice the area to the south of the Tropic of Cancer. Okay, okay, but still the India is called to be as a, or India is treated as a tropical country. Why? Because India is dominated by a tropical monsoonal winds. Okay, India is dominated by the tropical monsoonal winds. Okay, and also the air masses of Central Asia. Okay, the air masses of the Central Asia are blocked by the Himalayas. So that is why the temperate effect is not visible over to the Indian mainland, because most of the air masses of Central Asia are blocked by the Himalayas. Okay, and in terms of the insolation and in terms of the clarity into the sky or clarity into the sky, that also matches with the tropical country. Okay, and also the settlements, diseases, agricultural pattern, okay, or the primary economic activities, they all are tropical into the nature. So that is why the India's way of living, or India's, even though the latitudinal position of the country indicates that more than half of the area of the country is in temperate region, or it is in a subtropical and temperate regions, but still the India is not to be called as a temperate. Why? Because the climatic characteristics of the India, or the living style of the people, their economic activities of the people, they all matches with the tropical countries. Okay, they all matches with the tropical countries. Okay, now अब लिखिएगा इसके बाद आप लोग जल्दी से लिखिएगा, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया. देखिएगा, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 major physiographic unit. India is divided into 5 major physiographic units. India is divided into 5 major physiographic units. पहला लिखिएगा, नॉर्दर्न माउंटेन सिस्टम, दूसरा लिखिएगा ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, तीसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, तीसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा जस्ट अ मिनट गाइस, तीसरा क्या लिखा आप लोगों ने, पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा कोस्टल प्लेन्स,
और नेक्स्ट लिखिएगा फिफ्थ आइलैंड्स। आइलैंड्स, ओके। अब इसके बाद लिखिएगा पहले आप लोग मैं थोड़ा सा आप लोगों को आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंडिया का रॉक स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको समझा देता हूं कि व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रॉक स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव। और उसके बाद मैं आपको I'll मूव टुवर्ड्स द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, what we will do, we will have a complete discussion on all the 5 physiographic unit. Once you are acquainted with all the 5 physiographic unit, then we will move towards the geological history of the India. Okay, that is very important, that how the India from an ancient landmass has took the present shape. Okay, from the ancient landmass means the landmass which is believed to be with the origin of the earth. Okay, which is believed to be formed with the origin of the earth, because India is among very few nations which consist of a ancient landmass, and these ancient landmass are having their relationship with the origin of the earth. Okay, so how the present shape of the India took place, how the origin of the present shape of the India took place from the ancient landmass to the present shape. Okay, so we will discuss it in terms of the geological history of India, and I like to tell you that in terms of the geological history of the India, that the or I would say that the entire history, more than 95% of the India's history is based on the geological history of the peninsular India. Okay, because the remaining part of the India is quite new. Okay, it is quite new, or you can say it is formed in a very later phase, but most of the part of the India is having their long history. Okay, and in terms of the history of the India, we will discuss about the history of the peninsular landmass. Okay, we'll discuss about that entire history of the peninsular landmass. Okay, so write down, या पहले हम लोग मैं तुम्हें सारी पहले फिजियोग्राफी बता दूं, अब फिर उसके बाद रॉक्स के बारे में बताऊं, देन इट वुड बी इजी फॉर यू टू लोकेट द प्लेसेस ना। ओके, पहला लिखिएगा आप लोग फर्स्ट वन लिखिएगा आप लोग, देखिएगा नॉर्दर्न माउंटेन सिस्टम, northern mountain system. Okay, now as far as the northern mountain systems are concerned, we will take it into a different ranges, or we will take it into a different, we will divide them into a different parts. Okay, or we can divide the Himalayas, because the northern mountain system is basically the Himalayas. Okay, so we will have a divisions of these Himalayas. Okay, now these divisions of the Himalayas would be taken in terms of the different ranges that we have. Okay, now first of all we will discuss about what we have into the northern part, and then we will discuss about what we have into the northeastern part. So we will take it to be as a northern Himalayan system. Now in terms of a northern Himalayan system, we will take about the Trans-Himalayas. The northern part is called to be as a Trans-Himalayas, and then we have a central, then we have a main Himalayas, and then we will be having the another one that is to be called as a Northeast Himalayas, or that is to be called as a Purvanchals. Okay, so we will start from the south, and the southernmost range that we have into the Himalayas is a Shivalik. Shivalik is followed by the middle Himalayas. इधर ध्यान दे लेना सब लोग. The southernmost part is called to be as a Shivalik. Shivalik is followed by the middle Himalayas, and after the middle Himalayas we have a great Himalayas, and after the great Himalayas all the ranges are called to be as a Trans Himalayas. And among the Trans Himalayas we have a Jaskar range, we have a Ladakh range, and we have a Karakoram range. Okay, these are there, and then we will move towards the Purvanchal, that is the Himalayas into the northeastern part. Okay, and we will see that the Himalayas have taken a southern turn, or there is a southern bend into the east-west orientation of the Himalayas, and the Himalayas seems to be turning towards their south. And as a result of this turning towards their south, they are forming a low hill country region, or a low hill region, and that low hill region is called to be as a Purvanchals.
and you will find them, these Purvanchals, into the Arunachal Pradesh, and you will find them in Mizoram, you will find them in Nagaland, okay, and you will find them in Manipur. Okay, so all 4 or 5 states of our country, okay, they are having this sprawling northeastern Himalayas, or you can call it to be as a Purvanchal. This point is clear. So, in order to understand the Himalayas, we know that how the Himalayas are formed. I hope most of you are aware about this formation of the Himalayas. The formation of the Himalayas is basically associated with the continental convergence. Okay, that is associated with the continental convergence. And as you know that India was a part of a Pangaea, okay, and it was a part of a Gondwana land. And after getting separated from the Gondwana, it start moving towards the equator or start moving towards the north. And after it plunges into the Eurasian plate, and as a result of this convergence, the formation of the Himalayas have taken place. Now, between the Indian plate and between the Indian landmass and between the European landmass, there was a shallow sea, and that sea was called to be as a Tethys. Now, sediments from European landmass and the Indian landmass get deposited into those shallow sea, and this shallow sea is also called to be as a geosyncline. Okay, and as the two plates come close to each other, the sediments between the two land masses is squeezed into the form of a fold. Okay, and later on, as they come close to each other, then there is a crustal bending, or the bending of the crust also took place, and which has resulted into the higher heights of these folds, and which has finally created the mountain system, or you will say one of the greatest mountain system over to the globe, and that we call it to be as a Himalayas. Okay, that is generally called. Now, different ranges are formed in a different ages. You cannot say that all of them are formed in a single parallel to each other. All of them means there was a time gap between the different ranges. Okay, and they have taken place. The formation of these have taken place in a certain sequence. And Indian plate is still in the process of convergence. Okay, and as a result, that it is also believed that there is another for Himalayas which is in the process of formation to the south of the Shivalik. अभी तुम रुड़की की तरफ जाते हो तो रुड़की का हाइट बढ़ रही है. So that also indicate, मतलब to the south of the Haridwar, the height is increasing. So that indicates that there is an upliftment of a land taking place, and it may be a possibility that a new range or a new upliftment may took place to the south of the Shivalik. Okay, this point is clear. This point is clear. Okay, now write down the first one. लिखिएगा. Himalayas are formed as a result of continent and continent convergence. As a result of continent and continent convergence. देखिएगा. देखिए, it consists of several parallel ranges देखिएगा from south to north. From south to north, it is Shivalik, okay. Second, Middle Himalayas. Third, Great Himalayas. Trans Himalayas. Fourth, Trans Himalayas are also called Tibetan Himalayas. Tibetan Himalayas. Okay, and the fifth one is taken to be as a Eastern Hills or Purvanchals. Eastern Hills or Purvanchals. Okay. Now, all these ranges are parallel or they may be having a convergence also. Okay, convergence also. आगे लिखिएगा. Next point. These ranges are separated by deep valleys
Okay, their southern slopes have a steep gradient. Their southern slopes have a steep gradient. Okay, whereas northern slopes are gentle, and this problem occurs during the Kargil war also, because Indian army को किधर से चढ़ना था? Southern slope से. ओके, और जो पाकिस्तान की आर्मी थी वो नॉर्दर्न स्लोप से इजीली स्केल कर पा रही थी और इंडियन आर्मी को सदर्न स्लोप से करना था। तो दो स्टीपनेस जो थी, ग्रेडियंट जो है ना, ये हिमालयाज का जो ग्रेडियंट है ना टुवर्ड्स द साउथ, साउथ वाली जो स्लोप है ना उस पे ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाई द स्टीपनेस इज हाई. Okay, and on the northern flanks, or you will say that on the northern slopes, the steepness is less. Okay, now it occurs just because the pushing of the Indian plate. Now with the pushing of the Indian plate, the folds, most of the fold, because initially when the two plates come close to each other, okay, there may be a symmetrical fold. The fold may be symmetrical into the nature. This could be the symmetrical nature of the fold. But now the convergence of the two plates is not maintaining a equal pace, or the movement of the two plates are not maintaining a equal pace. So it may be possible that suppose this is an Indian plate, and with this Indian plate the folds may have banded, and this has resulted into the creation of a asymmetrical type of a fold. So that is why the southern slopes are relatively steep, okay, and the northern slopes are relatively gentle. This point is clear? नहीं समझ में आया आपको? ओके, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. ओके, इसलिए क्या होता है कि मींस अगर हम चाइना वाली साइड से है ना माउंट एवरेस्ट को चढ़ते हैं तो आसान होता है, और नेपाल वाली साइड से चढ़ते हैं तो दिक्कत होता है. चाइना ने थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, तो इसलिए ज्यादातर लोगों को नेपाल वाली साइड से चढ़ना पड़ता है, तो इसलिए ज्यादा डिफिकल्टी आ जाती है. बहुत ज्यादा है हाइड्रोइलेक्ट्रिक, नदियों का तो पोटेंशियल है ही वहां पे. बेटा डैम बनाने के लिए हमें बहुत सारी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी होती है. ओके, क्योंकि हम हर जगह डैम नहीं बना सकते. हमें सेसमिसिटी भी देखनी होती है, क्योंकि हिमालयाज आर सेसमिकली प्रोन. ओके, एंड दीज आर टेक्टोनिकली एक्टिव रीजंस. सो अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड इज स्टिल टेकिंग प्लेस, so which may result into the creation of earthquakes. Okay, because isostatic imbalances is still there, because Himalayas has not yet reached to their isostatic adjustment. So isostatic maladjustment is still there, and that is why the Himalayas are rising. Okay, and as a result of this rising of the Himalayas, we have a tectonic disturbances which occurs, and these tectonic disturbances may create a serious problem if for any hydroelectric projects. And moreover, you cannot create a dam at every place. Okay, you need to having a unique locations for the constructions of a dam. For example, gorges. Gorges are considered to be as ideal for the construction of a dam, but every gorge is not ideal, because you need to look to the stability of the slope also. You need to look to the stability of the nearby structures also. क्योंकि हवा में तो बनेगा नहीं, बनेगा तो बेस पे ही, और जब तक अगर स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप बेटा रोकोगे कैसे उसे? आपको ह्यूज वॉल्यूम ऑफ द वाटर को रोकना होता है फॉर द. ओके, नाउ दीज रीजंस आर आल्सो गुड फॉर योर हाइड्रोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रोथर्मल, एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? नॉट हाइड्रोथर्मल, जियोथर्मल. Okay, they are very important for the geothermal also, because in these Himalayas the geothermal gradient is relatively steep. You have a steeper geothermal gradient. So with this steeper geothermal gradient, you have a good potential of generating a geothermal energy, because I have discussed in the context of a geothermal gradient also that the geothermal gradients are good, or they are higher, they are on the higher side in the regions where the two plates are converging. Okay, where the convergence zones are there. So therefore, Purga Valley and other valleys in Himachal also, we have many places where you will find a good potential site for the generation of geothermal energy. Okay, so they are good in terms of hydroelectricity. They are also good in terms of geothermal, but not all the places you cannot, at all the places you cannot construct a hydrothermal, because you need to look to the stability of the structures also, and the ecological condition और इकोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस ऑल्सो. अब पीछे देखो ना, पीछे हमने एक डैम बनाया था, और एंड दैट डैम हैज रिजल्टेड इनटू अ मेजर डिजास्टर. ओके, आप देखो ना पीछे कौन सा अभी उत्तराखंड के अंदर में प्रॉब्लम हुआ था ना,
टीरी नहीं, टीरी तो बहुत पहले बना था, अभी तो एक साल पहले ही तो हुआ था, फ्लैश फ्लड का जो हुआ था, ग्लेशियर लेक आउटफ्लो हुआ था, ओके, जिसमें ग्लेशियर जो था ना वही फट गया था, पूरा ग्लेशियर लेक जो होती है, एंड द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंटर इट डाउनस्ट्रीम, and which has in fact destroyed the under construction site of that dam also. ऋषि कुलिया कौन सा है, ऋषि कुलिया वाला था, so that was the place, okay, where the dam actually means the dam was collapsed just because of the flash flood. Okay, is it clear? Next point लिखिएगा. And these Himalayas are undoubtedly they are the houses of many glaciers, and obviously they are the source of many rivers also, because the melting of the glaciers are the major source of these Himalayan rivers. Okay, next point लिखिएगा. Most of the Himalayan ranges fall in India, Nepal and Bhutan. भूटान, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा, पाकिस्तान में भी वेस्टर्न पार्ट आ जाता है, पाकिस्तान में भी आ जाता है, अफगानिस्तान में भी आ जाता है, सेंट्रल एशिया के अंदर में, बिकॉज फ्रॉम द सेंट्रल एशिया वी हैव सो मेनी रेंजेस. ओके, आगे लिखिएगा. लिखिएगा, अब लिखिएगा, पहला लिखिएगा शिवालिक रेंज. लिखिएगा ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालयास. ओके, आउटर हिमालयास लिखिएगा. बिटवीन द ग्रेट प्लेन्स, between the Great Plains, okay, between the Great Plains, this is what a cross-sectional division of the Himalayas, and you can take it to be as a Ganga plain, and just to the between the Ganga plain and between the they lies between the means this is the Ganga plain to the south and the Middle Himalayas to their north. Okay, लिखिएगा, they are located between the Great Plains and Middle Himalayas. Okay. Now the important point for these Himalayas is that their average height is from 600 meter to 1500 meter. 1500 meter. Their average height is 600 meter to 1500 meter. Okay. And okay. Now their extension लिखिएगा, their extension is from Potwar Plateau. Potwar Plateau is in Pakistan. Okay. From Potwar Plateau to the Brahmaputra Valley. Potwar Plateau to the Brahmaputra Valley. Potwar Plateau to the Brahmaputra Valley. एटलस है आप लोगों के पास? हाँ, निकालो नॉर्दर्न इंडिया का जो माउंटेन सिस्टम है ना, पूरा निकाल लो तुम लोग. एटलस जरूर लेके आनी है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर में, विदाउट एटलस तो काम नहीं चल पाएगा बेटा. इसको नहीं, इससे नहीं, इसको ऐसे नहीं, यहां पे निकाल ले. अब इसको बड़ा करके निकाल ले. ये शिवालिक है ना, टोटल शिवालिक चल रहा है ना, ये फ्रॉम पोतवार प्लेट्यू, यहाँ पोतवार प्लेट्यू आता है पाकिस्तान का. ओके, दिस इज द कंप्लीट शिवालिक. आपके पास भी नहीं है एटलस? मैं तो कहा था आप लोगों से कि ज्योग्राफी की क्लास में एटलस जरूर लेके आनी है. ओके, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट. देखिएगा, अब इसके अंदर में भी वही पॉइंट आपको याद रखना है. द इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सदर्न स्लोप्स आर स्टीपर एंड नॉर्दर्न स्लोप्स आर जेंटल.
Okay, southern slopes are steeper and northern slopes are gentle. Okay. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है शिवालिक के लिए जो आपको याद रखना है वो है इट इज एन अनब्रोकन चेन ऑफ लो हिल्स. Okay, of low hills from Jammu to Arunachal Pradesh. In the context of the इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें फ्रॉम जम्मू टू अरुणाचल प्रदेश, केवल बीच में आपको एक जगह गैप मिलता है वेयर द तिस्ता रिवर हैज क्रिएटेड अ गैप फॉर अराउंड 80 to 90 किलोमीटर्स. देखिएगा, एक्सेप्ट अ गैप ऑफ 80 to 90 किलोमीटर क्रिएटेड बाय तिस्ता रिवर, TISTA, तिस्ता रिवर. ओके, नाउ अगर आप लोगों को बुक के बारे में कोई पढ़नी है इसको लेके तो माजिद हुसैन की इंडियन ज्योग्राफी आप ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो खुल्लड़ वाली किताब जो होती है वो भी ले सकते हैं. ओके, इन दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हैं. खुल्लड़ की किताब थोड़ा सा बल्कि बुक है, बहुत मोटी किताब हो जाती है फॉर द जनरल स्टडीज पर्पस. इफ यू आर हैविंग अ ज्योग्राफी ऑप्शन तो कुछ हद तक सही है वो, लेकिन फॉर योर जीएस पर्पस आई थिंक इट इज गोइंग टू बी क्वाइट बल्कि, जो खुल्लड़ साहब की किताब है. ओके, आगे लिखिएगा. लिखिएगा शिवालिक रेंज on the eastern side is covered with a thick forest and western side is devoid of forest cover. Devoid मतलब कम है वहां पे. The presence of the forest is relatively less on the western side. So नेपाल से लेके तुम पूरा अरुणाचल प्रदेश तक जाते हो तो आपको शिवालिक में काफी डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं. ओके, और जैसे जैसे तुम नेपाल से जम्मू की तरफ चलना शुरू करते हो तो आपको क्या होता है, फॉरेस्ट कवर जो होता है वो कम होने लगता है. इसके पीछे रीजन क्या है, कोई बता सकता है मेरे को? एग्रीकल्चर कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है. एग्रीकल्चर तो ज्यादातर प्लेन एरियाज में होगा. हाँ, वेस्टर्न साइड इज डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट. बिल्कुल सही. जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं रेनफॉल जो होती है वो कम होती जाती है. ओके, और दूसरी बात ये भी था कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा शिवालिक जो वेस्टर्न साइड के थे उनका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हुआ. ओके, तो मेन रीजन तो खैर यही है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ द रेनफॉल. लिखिएगा, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ रेनफॉल from east to west. Decrease of the rainfall from east to west. Next point लिखिएगा आप लोग. लिखिएगा the slopes of Shivaliks are dissected by seasonal streams. The slopes of Shivaliks are dissected by seasonal streams. और इन सीजनल स्ट्रीम्स के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है इन द रीजन्स ऑफ द पंजाब और इन द रीजन्स ऑफ द हिमाचल. द वर्ड दैट इज यूज्ड इज कोस. सीजनल स्ट्रीम्स लोकली नोन एज कोस, CHOS. ओके, लिखिएगा. अब शिवालिक की अगर हम बात करें तो आप एज यू नो दैट दे आर द लास्ट टू फॉर्म्ड. ओके, लिखिएगा शिवालिक्स वर फॉर्म्ड लास्ट ऑफ ऑल द रेंजेस. ओके, द फॉर्मेशन ऑफ द शिवालिक का जो पीरियड लिया जाता है
द शिवालिक के फॉर्मेशन का जो हम पीरियड लेके चलते हैं, दैट इज फ्रॉम 2 to 20 मिलियन ईयर्स अगो. Now you can again have a look to the geological time scale, and you can just try to understand this is 2 to that is from. So this could be the time where we can take it to be as a 2 to 20 million years ago in the time of Miocene. Okay, although the formation of the Himalayas may have taken place with the beginning of Tertiary, because with the beginning of the Tertiary, or you can say by the end of the Cretaceous and the beginning of the Tertiary, okay, there was a major development of the or the upliftment of the land have started taking place. Okay, and you can say that this has also resulted into the formation of Himalayas. So as the Himalayas are the fold mountains, and all the folds are not created in a same time. Okay, means they are created into a certain sequence, and the southernmost fold that is a Shivalik is the last in the sequence of these fold. Okay, so it is believed that the formation of the Shivalik may have started 20 million years ago, and the completion of this Shivalik or the present shape of these Shivalik may have taken around 2 billion years ago. Okay, देखिएगा, they were the last to form of all the ranges from 2 to 20 million years ago. From 2 to 20 million years ago. आगे लिखिएगा, शिवालिक्स आर कंसोलिडेटेड सैंड्स. शिवालिक्स आर consolidated sands gravels and conglomerates deposits ओके, और ये कहां से आया लिखिएगा, विच आर ब्रॉट बाय द रिवर्स flowing from the higher ranges, which are brought by the rivers flowing from the higher ranges. Okay, flowing from the higher ranges. Okay, because the sediments coming from the middle Himalayas, okay, was deposited between the Indian plate in the lower region, and later on when these lower regions was folded, the compression took place and it has hardened those fold. Okay, मतलब जितना भी मिडिल हिमालयाज से जो मिडिल हिमालयाज से जो या हायर रीचेस से जो नदियां आ रही थी, वो अपना सारा का सारा डिपॉजिट एलुवियल फैंस एंड कोन्स की फॉर्म में डिपॉजिट कर रही थी. नाउ जब इस एरिया का अपलिफ्टमेंट हुआ, तो इट हैज रिजल्टेड इनटू द क्रिएशन ऑफ अ शिवालिक. नाउ विद दिस अपलिफ्टमेंट अ स्ट्रॉन्ग कंप्रेशनल फोर्सेस आल्सो स्टार्टेड ऑपरेटिंग, and as a result these loose sediments was hardened in the form of a rocks. Okay, and finally you see a form of a Shivalik. Okay, लिखिएगा, these deposits were folded due to the compression offered by the northward movement of the Indian plate. Due to the compression offered by the northward movement of the Indian plate. Due to the compression offered by the northward movement of the Indian plate. Okay, this point is clear? अरे बोलो बच्चों, movement of the Indian plate, northward movement of the Indian plate. Now you know that these Shivaliks are also known by a different names in a different places of the country. Okay, different part of the country, and you know that in Jammu they are known as Jammu Hills. Okay, they are known as Jammu Hills. जैसे आपने तिरकुटा हिल्स के बारे में सुना है? Have you heard about the तिरकुटा हिल्स? तिरकुटा हिल्स के बारे में कभी नहीं सुना ही नहीं आज तक आप लोगों ने. वैष्णो देवी का सुना है? वैष्णो देवी कौन से हिल्स पे आता है? हाँ, बोला तो सर इसी पे होगा, तभी नहीं तो बोलने का मतलब ही नहीं था कोई. ओके, तो जो हिली रीजन ऑफ द वैष्णो देवी है, दैट इज तिरकुटा हिल्स. ओके, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ तिरकुटा हिल्स. ओके, आगे लिखिएगा, जम्मू का जम्मू हिल्स, एंड अरुणाचल प्रदेश में दे आर नोन बाय अ डिफरेंट नेम. डाफला लिख लो, इन अरुणाचल प्रदेश में डाफला,
मीरी, ये ट्राइबल ट्राइब्स हैं असल में, डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। ओके, डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, मिश्मी, मिश्रीनी, मिश्मी, डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, MISH, MI। अभी कोई अरुणाचल वाला होता ना तो ये पकड़ लेता। ओके, डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। ओके, अब आगे लिखिएगा। इन उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर में भी इसकी दो रेंज आती हैं, लिखिएगा। ढांग रेंज, DHANG, ढांग रेंज उत्तराखंड, और दुधवा रेंज, DUNDWA, DUNDWA, दुधवा रेंज। और नेपाल के अंदर में एक हिल एरिया आता है जिसका नाम है छुरिया घाट, छुरिया घाट हिल्स। ओके, छुरिया घाट हिल्स। ओके, दैट इज टू बी कॉल्ड इन नेपाल। ओके, अब आपको ये पता होगा कि शिवालिक्स वर द लास्ट टू फॉर्म्ड among all the ranges of the Himalayas. Okay, and as you know that they are formed as a result of accumulation of conglomerates. Okay, conglomerates is a type of a rock in which you will find sand, stone, silt, gravel. They all are cemented together. So that results into a sedimentary type of a rock, and that is to be called as a conglomerate. Okay, that is generally called to be as a conglomerate. So shivaliks were formed by the accumulation of conglomerates. Okay, and the important point is that these conglomerates that we have in the initial stages of deposition. Okay, because when we have a when we have a vast stretch consisting of the conglomerates, then these conglomerates in the initial stages of their deposition, they have obstructed the flow of the river. Okay, because the rivers which are coming from the middle Himalayas, they were obstructed by the conglomerates deposits or by the folding of the Shivalik. And as a result, it has created a temporary lakes between the middle Himalayas and the newly growing Shivaliks. Okay, now later on when the lakes were drained, okay, the water of the lakes were drained, okay, it has left a certain regions consisting of placer deposits or ancient lake regions, and these lakes regions are called to be as a Doon and Duar. The different types of the word is used, that is a Doon and the Duar. Okay, लिखिएगा. As Shivaliks were last to be formed, comma, they obstructed the course of the river. They obstructed the course of the river from the higher reaches of the Himalayas कोर्स ऑफ हिमालयास ऑफ द रिवर्स, क्या लिखा आप लोगों ने? नहीं नहीं, पूरी लाइन बताओ, क्या लिखा आप लोगों ने? पूरी लाइन बताइए. हाँ, दे ऑब्स्ट्रक्टेड द कोर्स ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग फ्रॉम द हायर रीचेस ऑफ द हिमालयास और कमिंग फ्रॉम द हायर रीचेस ऑफ द हिमालयास. अरे, ड्रेनिंग फ्रॉम द हायर हिमालयास, okay, and formed temporary lakes and formed temporary lakes and formed the temporary lakes and formed temporary lakes. Okay, लिखिएगा. With the passage of time, these lakes accumulate more deposits of conglomerates, more deposits of conglomerates.
and when the lakes were drained away, they leave behind a plains. They leave behind a plains known as dunes, known as dunes, और इसको दून भी बोल देते हैं, TOON, known as dunes in the west, and Duar in the east. ओके, इन द ईस्ट. अब इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि these are the we were having a higher reaches of the Himalayas already formed. Okay, central Himalayas, and then we have a middle Himalayas, and the Shivalik was in the process of formation. Now the rivers draining from these higher reaches, they tend to deposit their sediments in the form of alluvial cones or alluvial fans. Okay, now as the compression that took place into these alluvial cones and the alluvial fans, it has resulted into the hardening of these sediments, and these hardening of the sediments get converted into conglomerate. Okay, they are conglomerate. Now there was a vast stretch of conglomerate to the foothills of middle Himalayas. Okay, because the rivers were bringing sediments, and these sediments were compressed and they were later on turned into a conglomerate. Conglomerate कब होता है? Pebbles, छोटे-छोटे pebbles और sand आपस में joined हो जाते हैं. They get joined together and it makes a sedimentary rock, hard sedimentary rock, that is to be called as a conglomerate. Now, as there was a vast stretch of a conglomerate to the south of the middle Himalayas. This point is clear. Now, these conglomerates, actually these conglomerates obstruct the flow of the river. So river means because there were ridges of conglomerates that start forming, or they start taking place, or they start accumulating to the south of middle Himalayas. Okay. Now they obstructed the flow of the river. So as a result, some temporary lakes were formed. Some temporary lakes were formed. These were the temporary lakes that were formed because the river was unable to cross these deposits of the conglomerates. Now these temporary lakes still, they were there. These temporary lakes, the water of many of these rivers was draining into these temporary lakes, or they were the mouth of many rivers also. So when they were the mouth of the many rivers, so the sediments brought by the rivers start forming again. They start accumulating their sediments into these lakes. Okay, and as a result, the level of these lakes start rising, because constantly there was a sediments getting deposited into these lakes. Okay, and finally they got a route through which they cut those ridges, and they got the route, and the river got drained, or the lakes got drained, and leaving behind a plain areas. Okay, leaving behind a plain areas, and these plain areas into the western side is called to be as a dune, and on the eastern side they are called to be as a dwar. This point is clear. Means on the western side they are called to be as a dune, and on the eastern side they are called to be as a dwar. For example, we call Dehradun. So Dehradun क्या है? Lacustrine plain. They are called to be as a lacustrine plain. Lacustrine plain की हिंदी ये होती है सरोवरीय मैदान. किसी सरोवर के सूखने से, किसी लेक के सूखने से जब कोई प्लेन एरिया बन जाता है तो उसको लेकेस्टराइन कहलाता है. दिस पॉइंट इज क्लियर. किसी लेक के सूखने से. तो इन दिस, अगर तुम वहां जाते हो देहरादून में, तो आपको इसी तरीके का कॉन्ग्लोमरेट्स डिपॉजिट्स जो होता है ना, वो आपको काफी मिलता है. इज इट क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल देहरादून, इन उत्तराखंड. ओके, और भी एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा. पतली कोठरी, PATLI, पतली कोठरी, KOTHRI, पतली कोठरी. चौखंबा, CHAUKHAMBA, चौखंबा. उधमपुर, ओके. कोठा, KOTAH. हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो, बट सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है. ठीक है. ओके, एंड
So these are some of these lacustrine plains. These are लिखेगा are other lacustrine plains. Lacustrine plain. LACUSTRINE. Lacustrine plain. Lacustrine plain. ओके एक मिनट बच्चों जरा मैं एक फोन मेरे पास राइट डाउन द मिडिल हिमालयास. मिडिल हिमालयास लिखिएगा. मिडिल हिमालयास. ओके एनी डाउट विद द शिवालिक? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा मिडिल हिमालयास. नेक्स्ट वन इज मिडिल हिमालयास. ठीक है, दे लाइज बिटवीन शिवालिक. They lies between Shivalik. They lies between the Shivalik in the south and Great Himalayas in the north. Okay. Now there is another name which is given to these middle Himalayas. लिखेगा, that is lower Himalayas. Lower Himalayas. Lower Himalayas. Or Himachals, also called Himachals. Lower Himalayas or Himachal. Himadri Central Himalaya का आएगा. Okay. Now write down. Average height. Average height is 3500 meter to 4500 meter. ओके आगे लिखिएगा. अगेन द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इज southern slope is steeper and the northern slope is gentle. Okay. Okay. So therefore the steeper slope you will say that they are they are devoid of forest. Not much vegetation you will find on the southern slope. A good vegetation could be found on the northern slope. ओके क्योंकि सदर्न स्लोप पे स्लोप इनस्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि स्टीपनेस ज्यादा है. ओके अगर आपसे कोई पूछता है कि हिमालयाज में लैंडस्लाइड्स के क्यों ज्यादा हो जाता है, कारण यही है कि सदर्न स्लोप्स जो है वो बहुत ज्यादा स्टीपर है एंड डिफॉरेस्टेशन ने क्या करा, उसको कैटलिस्ट के तौर पे काम करा एंड देयरफॉर द फेलियर ऑफ द स्लोप इज क्वाइट फ्रीक्वेंट ऑन द सदर्न साइड एंड मोर ओवर द इंटेंस रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन ओके also saturate the soil okay with the water and which tend to make a slow failure or which causes a slow failure. Okay, so that could also be a reason of the landslides. Okay, आगे लिखिएगा. देखिएगा in Uttarakhand देखिएगा they consist of Mussoorie range and Nag Tibba range. इन हिमाचल प्रदेश में कौन सी है मिडिल हिमालयास की? वेरी गुड. इन हिमाचल प्रदेश धौलाधर, एटलस में देख लो धौलाधर रेंज. धौलाधर DHAOLA. कुल्लू मनाली गए हो ना? तो घूम लेके ही नहीं गए आप सर हैं? ओके धौलाधर. Okay, and then you have in Jammu and Kashmir Valley के साउथ में. Okay, in Jammu and Kashmir to the south of Kashmir Valley, Valley of Kashmir. Okay, that is Pir Panjal range. Pir Panjal range. Great Himalayas और Pir Panjal के बीच में that is a Valley of Kashmir. Kashmir Valley जो है ना, that is actually between a Pir Panjal and the Great Himalayas. Okay. ओके जवाहर टनल से जैसे तुम पीर पंजाल क्रॉस करते हो ना, यू विल एंटर इनटू द कश्मीर वैली. जवाहर टनल सुन रहे हो? कहाँ हो भैया तुम? कहाँ तुम्हारा दिमाग? क्या पढ़ा रहा हूं मैं? मिडिल हिमालयस में भी क्या बता रहा था मैं? हिमाचल में धौलाधर रेंज है
और पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयाज के बीच में क्या है? सारा देश में झगड़ा उस चीज का चल रहा है, उसे यही नहीं पता। पूरा देश में झगड़ा इस चीज का चल रहा है, इसे यही नहीं पता। वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर वैली, ओके, द होल कश्मीर वैली जो है ना, दैट इज बिटवीन लाइज बिटवीन दी पीर पंजाल एंड दैट इज धौलाधर, ओ सॉरी, ग्रेट हिमालयाज। Okay, and in Nepal also you have an extension of the middle Himalayas. And लिखेगा in Nepal they are called Mahabharat range. Mahabharat range. Okay, Mahabharat range. Is it clear? Now among all the ranges, the longest one is Pir Panjal. लिखेगा Pir Panjal is the longest one. Okay, which extends from Jhelum. Which extends from Jhelum river. इसके वेस्ट में झेलम जॉर्ज आती, झेलम रिवर आती है। झेलम पासेस थ्रू दिस वैली ऑफ कश्मीर। श्रीनगर सारा झेलम का एरिया है। ओके, जब झेलम में बाढ़ आ जाती है तब आप देखते हो पूरा श्रीनगर डूब जाता है। श्रीनगर रिलेटिवली प्लेन एरिया के उसमें आ जाता है, इट इज इन द वैली रीजन। ओके, एंड अगेन यू विल फाइंड द conglomerates deposits, and again you will find the glacial deposits, because this entire region was also consisting of a lake, and the rivers or the Jhelum river, they tend to drain into those lakes, and later on when that lake was drained, okay, then it has resulted into the creation of entire valleys or Kashmir valley. Okay, so लिखेगा आगे, लिखेगा पीर पंजाल इज द लॉन्गेस्ट वन। लिख लिया आप लोगों ने? बिटवीन झेलम एंड ब्यास, बिटवीन झेलम एंड ब्यास। ओके, आगे लिखिएगा, देखिएगा इंपॉर्टेंट पासेस, ये कल सारे आप मैप पे लोकेट करिएगा। इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ पीर पंजाल आर पीर पंजाल पास, ओके, पीर पंजाल पास, एंड देन यू हैव मैं देखता हूं इसमें पासेस का, मेरे पास अगर है तो मैं आपको समझाता हूं। Okay, we have passes also. So Pir Panjal Pass, okay, Pir Panjal Pass, एंड आप लिखिएगा बनिहाल पास, बनिहाल पास, बनिहाल पास, गोलब घर, गोलब घर पास, बनिहाल पास से जम्मू बारामूला लिंक भी बनाया गया रेलवे का, दैट इज थ्रू बनिहाल पास, है ना? बनिहाल पास से ही निकाला गया, बनिहाल पास से ना जो जम्मू और बारामूला का लिंक जो बनाया गया, दैट इज थ्रू बनिहाल पास। ओके, एंड नेक्स्ट आगे लिखिएगा, और देर आर टू इंपॉर्टेंट रिवर्स विच कट डाउन दिस पीर पंजाल, ओके, और विच मेक अ गॉर्जेस इन पीर पंजाल। लिखिएगा किशन गंगा, झेलम, और एक और इंपॉर्टेंट रिवर है छिनाब, छिनाब, CHENAB, okay, cut through this range, cut through this range, okay, आगे लिखिएगा धौलाधर रेंज passes through डलहौजी, धर्मशाला, नाम सुना है? शिमला, ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा
देखिएगा, कश्मीर वैली बिटवीन द पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालयास। कुछ किताबों में इसके बारे में कहा जाता है इट लाइज बिटवीन दी जास्कर रेंज, ट्रांस हिमालयास का जो है, ओके, बट जनरली इट इज एक्सेप्टेड इट लाइज बिटवीन दी पीर पंजाल एंड दी ग्रेट हिमालयास। कश्मीर वैली बिटवीन दी पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालयास is a synclinal basin, is a synclinal basin, synclinal basin, ओके। ध्यान रखिएगा कि सिंक्लाइनल बेसिन क्या होता है, जब फोल्ड्स क्रिएट होते हैं ना, तो जो ऊपर उठा हुआ एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन, और नीचे वाला जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंक्लाइन। तो दिस इज अ सिंक्लाइनल बेसिन, ओके। रिवर्स में डिपॉजिट्स देयर सेडिमेंट्स इनटू दिस सिंक्लाइनल बेसिन, ओके। इज अ सिंक्लाइनल बेसिन, SYNCLINAL, SYNCLINAL, synclinal basin with lacustrine, with lacustrine and glacial deposits, lacustrine and glacial deposits, with lacustrine and glacial deposits, with lacustrine and glacial, lacustrine मतलब लेक से रिलेटेड, with lacustrine and glacial deposits, ओके। आगे लिखिएगा, झेलम रिवर meanders, Jhelum river meanders through these deposits and cuts a deep gorge in Pir Panjal. Okay, आगे लिखा है, in Himachal Pradesh there is a Kangra valley. इसकी ये मिडिल हिमालयास की बड़ी सुंदर वैली है। इन हिमाचल प्रदेश देयर इज अ कांगड़ा वैली, ओके, which extends from the foot of Dhauladhar range to the south of Bias. Okay, it is a strike valley. It is a to the south of Bias. ओके, और लिखिएगा इट इज अ स्ट्राइक वैली, स्ट्राइक वैली। अब दो तरीके की वैलीज आपको मिलती हैं इस रीजन्स के अंदर में, दो तरीके की वैलीज। मान लो ये रेंज है, ये रेंज है, एक ये रिज है और एक ये रिज है, ओके। इन बिटवीन द टू रिज पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू द स्लोप, परपेंडिकुलर टू द स्लोप, दिस इज कॉल्ड टू बी एज अ स्ट्राइक वैली। ध्यान रहा, याद रहेगा, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ स्ट्राइक वैली। एंड दीज वैलीज दैट आर फॉर्म, ओके, पैरेलल टू द स्लोप, okay, or perpendicular to the ridge, that is called to be as a transverse valleys. This point is clear, they are called to be as a transverse valleys. So this is a strike valley and this is a transverse valleys. So you will find the Kangra valley as a form of a strike valley. Is it clear? That is a strike valley. आगे लिखिएगा, स्ट्राइक वैली बोलो या लॉन्गिट्यूडनल वैली बोलो, एक ही बात है। लिखिएगा, कुल्लू वैली in the upper course of the river, Kullu Valley in the upper course of the river is a transverse valley, is a transverse valley, is a transverse valley in the upper course of the Ravi river, river Ravi is a transverse valley. Okay, Kullu Valley में है, Manali is not in the valley region. Okay, मनाली वैली का नहीं है, कुल्लू क्या है, वैली में आ जाता है। ओके, वंस यू क्रॉस कुल्लू, कुल्लू के बाद ही सीधे फिर आप मनाली की हाइट लेते हो ना, यू रीचेस टू दी मनाली। ध्यान दिया कभी, गए नहीं, चलो
अब आगे लिखो, नेक्स्ट कौन सी रेंज है? आफ्टर द मिडिल हिमालयाज द नेक्स्ट वन इज टू द नॉर्थ। अगर हम चलेंगे तो कौन सी आ जाएगी? शिवालिक आ गई, मिडिल आ गई, फिर उसके बाद कौन सी आएगी? ग्रेट हिमालयाज। देखो ग्रेट हिमालयाज, ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री और सेंट्रल हिमालयाज। अब आगे लिखिएगा, इट्स एवरेज एलिवेशन इज 6100 मीटर अबव सी लेवल and average width is of about 25 kilometer. This point is clear. Next, it is mainly formed of the central crystallines, form of the central crystallines, ओके, सेंट्रल क्रिस्टलाइन। सेंट्रल क्रिस्टलाइन का मतलब होता है बेटा ग्रेनाइट एंड नीसेस। ये पूरा का पूरा देखो तीनों में फर्क है। मिडिल हिमालयाज का रॉक स्ट्रक्चर आपको अलग मिलेगा और शिवालिक तो पूरा सेडिमेंट से बना हुआ है विच इंक्लूड्स मेनली कॉन्ग्लोमेरेट्स, ओके। बट द सेंट्रल हिमालयाज जो है दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रेनाइट एंड नीसेस, ओके, and obviously they would be covered by metamorphosed sediments, or they may be covered by the metamorphosed sediments like metamorphosed sediments of the limestone. ओके, तो जनरली है क्या कि इन हिमालयाज की जो कोर है ना, जो सेंट्रल हिमालयाज है, इसको सेंट्रल एक्सिस भी कहा जाता है, ओके, सेंट्रल एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। सो हिमालयाज की जो कोर है ना, इन हिमालयाज की अंदर का कोर का एरिया तुम देखोगे तो दैट विल बी कंसिस्ट ऑफ ग्रेनाइट एंड नेसेस, ओके। ग्रेनाइट का जब मेटामॉर्फिज्म हो जाता है तो दैट रिजल्ट्स इनटू निस, ओके, एंड जो क्लेज होती हैं उनका मेटामॉर्फिज्म हो जाता है तो दैट में रिजल्ट इनटू सिस्ट, ओके। समटाइम्स ग्रेनाइट का फेल्सपार वाला कंपोनेंट चला जाता है तो ग्रेनाइट का जो निसेस जो होती है ना उसके अंदर में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। सो अंडर द इंटेंस प्रेशर, व्हेन द ग्रेनाइट्स आर अंडर द इंटेंस प्रेशर और द इग्नियस रॉक्स आर अंडर द इंटेंस प्रेशर, they are metamorphosed, okay, or concocted, okay, highly squeezed and metamorphosed with the changed chemical compositions, okay. So this have taken place just because of the compression, okay, just because of the subduction and the compression which took place as a result of that subduction, okay. So that is believed that these granites or gneisses may have their origin or may have their connection with the Archean period. Okay, and at some places these granites are exposed when the overlying sediments are eroded. So at some places you will find that these granites are exposed, okay, granites or gneisses are exposed. So if you are traveling in a great Himalayas, you will find that there are some places where you will find a granite country or you will find the gneisses country. This point is clear. So that also indicates that the Himalayas do not have only a deposits of sediments into the sea or the sediments of the lake. They also have a crustal folding, or the folding of the crust has taken place. Is it clear? They also have an element of crustal folding, not only the folding of the sediments into the tethys. क्योंकि इनिशियली ये माना जाता था, आप ध्यान दे रहे हैं ना मेरी बात पे आप लोग, है ना? क्या बोल रहा हूं मैं? क्या? मानस तेरा मुर्गा बनेगा क्लास में। ये इंडियन प्लेट है, ये सबडक्ट होती है इन द यूरेशियन प्लेट। वी वर हैविंग अ सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स में फोल्डिंग होती है, लेकिन ये देखा गया कि सिंपल बाय द फोल्डिंग ऑफ द सेडिमेंट्स द माइटी हिमालयाज मे हैव नॉट फॉर्म्ड, because the height of the sediments
or the sediments are not sufficient enough to give a great height to these Himalayas. It means the folding may have taken in the crust also, and which has resulted into the increase in the height of the Himalayas. Is it clear? And when the crustal folding have took place, they may consist of granite and gneiss. So that is why in the core of the central Himalayas you will find granite and gneiss. वही तो और कौन सा ग्रेनाइट, ग्रेनेटॉइड ज्यादातर है वो, जिसमें ग्रेन्स बड़े होते हैं. ओके, सो मैंने आपको बताया इग्नियस रॉक्स की अलग अलग कैटेगरी होती है. प्लूटोनिक रॉक्स जो होती है, जो इंट्रूसिव होती है, वो ग्रेनाइट की कैटेगरी में आ जाती हैं. और फिर उसके बाद रायोलाइट मैंने आपको बताया था. और इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ग्रेन्स. ओके, साइज ऑफ द ग्रेन्स. If the size of the grains is smaller or smaller size of the grains are there, it means these rocks are formed as a result of rapid cooling. Okay, and if the size of the grains are large, it means these rocks are formed as a result of slow cooling. So granites, when come under the compressional forces or when they are metamorphosed, they are converted into a gneiss. Okay, generally it is said that gneiss is a final stage of all the rocks. Most of the rocks will be converted into the gneiss, okay, after the metamorphism. Is it clear? For example, we have charnockite. Okay, we have a charnockite, khondolites. They all have the metamorphosed rock of the ancient sediments. This point is clear? Okay, तो हम लोग जब रॉक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर में सारी सीरीज देखेंगे. बंगाल नेसेस, बुंदेलखंड नेसेस. Okay, or we have a Himalayan nesses also. Okay, and we will also discuss about the Nilgiri nesses. Nilgiri nesses जो है ना, charnockite and Nilgiri nesses जो है ना, that we will discuss. ठीक है? तो you know that charnockite के बारे में, because in Kolkata we have a stone, we have a monument built up of that charnockite. Okay? Okay? समझ में आया? ओके, आगे लिखिएगा. लिखिएगा. The folds of this range are asymmetrical. With a steep southern slope, and gentle northern slope. Okay, लिखिएगा. Great Himalayas are terminated abruptly. हाँ, terminated abruptly. Terminated abruptly at the syntaxial bends. At the syntaxial bends. Terminated abruptly at the syntaxial bend on the western side. On the western side at Nanga Parbat, Nanga. And on eastern side at the Namcha Barwa. And on eastern side at the Namcha Barwa. Okay, now you will see that these great Himalayas take a southerly turn. And this elbow-shaped turn of the Himalayas, they are called syntaxial band. Okay, now one syntaxial band you will find into the Arunachal Pradesh at the Namcha Barwa, and then you will have an extension of these Himalayas in the form of a low hills, like Naga Hills, Manipur Hills. Okay, they are in the form of a low hills. And these again reaches into the Pakistan areas, and we have Kirthar range, Suleiman range, they all are the ranges, and which can be believed to be the southward extension of the Great Himalayas. Okay, now obviously when the Himalayas are bent towards the south, the height of the Himalayas are not the same, because they are generally transformed into a low hills. Okay, they are generally transformed into a low hills. So it is believed, it is also believed that there was a place here. Okay,
there was a place here that is known to be as a Latus. Okay, Lato. Okay, there was a place, or you can call it to be as a village into the Jammu Kashmir regions, earlier both of Pakistan and India. Okay, and when the Indian plate plunges into the Eurasian plate, it hinges at this point. Hinges at this point. Okay, you understand this language? It hinges at this point. It means that there was a hinge which was created. Hinge का मतलब समझते हो, जैसे दरवाजे में कब्जे होते हैं ना, तो the entire door tend to get open or close around that hinge. Okay, the rotation of the entire door took place around that hinge. नहीं समझ में आया? बेटा अगर हमने ये हिंज बना दिया, यहाँ पे कब्जा लगा दिया, तो पूरा का पूरा पैन जो होगा उस हिंज के चारों ओर घूम ऐसे रोटेट नहीं होगा? होगा नहीं होगा? So similarly the Indian plate get hinged at this point, that is Lato, and then it start moving in an anti-clockwise direction. Okay, start moving in an anti-clockwise direction, and just because of this anti-clockwise direction, we have a crescent shape of these Himalayas. You got this point? And this Indian plate was also having its Eurasian plate on this side. So this is a complete range of the Pakistan right now. Okay, Kirthar range, Suleiman range. Okay, we have, and on this side again we were having a Eurasian plate. So here also the convergence was taking place, and here we have a Burmese plate. So Indian plate was also getting subducted inside the Burmese plate. अरे बोलो बच्चों, okay, is it clear? So these subductions may have resulted into the creation of low hills of the northeastern region or the Purvanchals, and here also the subductions taking place, and that could be also Kirthar, Suleiman, and all the types of the ranges that we have. So these Himalayas, why we have a crescent shape of these Himalayas? Just because the Indian plate hinges at the Lato, okay, and then rotate anti-clockwise. Otherwise we will not be having this crescent shape of the Himalaya. Chandra आकार में हमारे हिमालय की आकृति नहीं होती. And it is just because the Indian plate was more active. The Indian plate, the compression from the Indian plate side was more active. So that is why we have a more steeper southern slope in comparison to northern slope. Okay, मुझे खाली पेज दो तुम लोग, एक खाली पेज दो, खाली पेज दो, अभी बताते हैं. ओके, अब मैंने जैसे आपको बताया था, these Himalayas are the fold mountains. Okay, they are the typical fold mountains. They are formed as a result of crustal folding. Okay, now this is a crust area and it start folding. अगर दोनों तरफ से मैंने दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगा रहा हूं तो फोल्ड सिमेट्रिकल होगा. सिमेट्रिकल होगा नहीं होगा? दोनों तरफ के एंगल एक जैसे होंगे. लेकिन मान लो अगर मैंने एक तरफ की फोर्स ज्यादा लगानी शुरू कर दी तो एक तरफ की स्लोप बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ की स्लोप क्या होगी? जेंटल हो जाएगी. तो इसी तरीके से इंडियन साइड पर ज्यादा फोर्स लगने की वजह से you have a tilting of the fold. Okay, and this tilting of the fold has created a steeper southern slope, okay, from the Indian side, and a gentle Eurasian side. Eurasian plate की जो slope है, that is relatively gentle. This point is clear. So this is common in all the ranges of the Himalayas. Okay, southern slope are always steeper and the northern slope are always gentle. ओके, नॉर्दर्न स्लोप इज जेंटल. अभी रखा रहने देते हैं यहाँ पे, क्या पता फर्दर फिर जरूरत पड़ जाए. ओके, चलिए आगे लिखिएगा, लिखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा. ग्रेट हिमालयास कंसिस्ट टॉलेस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड. विच इंक्लूड्स माउंट एवरेस्ट. पता है ना आप लोगों को, माउंट एवरेस्ट भी आता है इसमें. एंड द माउंट एवरेस्ट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स ना. ओके, नेपाल में इसको सागर मथ भी कहा जाता है. सागर मथा, सागर मथा, सागर मंथन से कनेक्टेड. एक्चुअली इट इज कनेक्टेड विद द सागर मंथन. इवन इन अवर वैदिक लिटरेचर्स आल्सो वी हैव मेंशन्ड इट एज अ सागर मथ. ओके, सागर मंथन. ओके, सो इट इज बिलीव दैट इंडियन माइथोलॉजी के अंदर में, हिंदू माइथोलॉजीज के अंदर में सागर मंथन का सुना है ना तुमने, कहानी सुनी है ना. शेषनाग की रस्सी बन जाती है और कछुए का, और
और माउंट एवरेस्ट को हम एज अ मंथन के तौर पे ले लेते हैं, तो उसमें से विष निकला और उसमें से अमृत निकला। तो विष जो थे देवताओं के हाथ में जा रहा था, तो देवताओं को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और अपने गले तक रोक लिया। तो जब उसके बाद वो नीलकंठ कहलाते हैं। ठीक है? ये तो सुना है ना आप लोगों ने ये सब चीज के बारे में? नहीं सुना तो अब जेल जाओगे तुम लोग। ठीक है? ठीक है? अगर नहीं सुना है तुमने तो। ओके, तो भारत में रह के तुम्हें अगर ये नहीं पता तब तो फिर तुम देशद्रोही हो। ठीक है? और नेक्स्ट इसको चाइना के अंदर में कहा जाता है मदर ऑफ द वर्ल्ड, चोमोलंगमा। चोमोलंगमा, चोमलंगमा, CHOM, मॉम से ले लो, चोम, मॉम की जगह चोम बोल रहे हो, ठीक है, तो चोमलंगमा। ओके, CHOMLUNGMA, चोमलंगमा। ओके, so that is the name. Okay, कब बोल गए पता भी नहीं चला कि बोल भी गए। Is it clear? तो okay, so Mount Everest was named by its first surveyor, that is George Everest. He was the Surveyor General of India in 1841, and in 1852 it was established to be as the highest peak of the world by the Great Trigonometrical Survey of the India. Okay, there was a trigonometrical survey of the India took place in terms of a heights of a different places, and Mount Everest was declared to be as the highest peak of the world. ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। अब ये बताएगा, ये तो प्रैक्टिकल करता है इस चीज के। ले आए ना, वो उठा लाना एक दिन इसको कॉलेज से, हैं? तो वो ले आना। क्या नाम है उस इंस्ट्रूमेंट का? एक इंस्ट्रूमेंट भी है, प्लम लाइन भी मिलती है और एक वो भी मिलता है। तुमने करे एक्सपेरिमेंट, ये प्रैक्टिकल करे इस चीज के? प्रैक्टिकल तो पार्ट 1 में आ जाता है बीए के। वो वाले नहीं करे तुमने? वो जो एक छोटा सा वो देते हैं उससे पूरा मेजर करवाते हैं। ओके, एंगल नोट कर लो ना, तो एंगल तुम्हें मिल गया तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे तो फिर तो निकाल ही सकते हो तुम। तुम्हें तो इंजीनियरिंग करी है ना? तुमने क्या करा फिर? पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स है तुम्हारी, फिर तो तुम क्या पूछ रहे हो? वही आस्किंग। अब ना तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पता है, 12th तक पढ़ी है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस, ये तो फॉर्मूला पता है, पाइथागोरस तो पता है ना? हाँ, तो वो पाइथागोरस का फॉर्मूला हो गया बस वो, या ट्रायंगल के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वो होता है ना, उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर लिया जाता है। ओके, अब हर जगह जाने की जरूरत थोड़ी कोई, अब तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं ना उस चीज को। ओके, नाउ देखिएगा इंपॉर्टेंट पासेस कौन कौन से हैं। यहां के इंपॉर्टेंट पासेस की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ दिस रीजन इज बुर्जिल पास, बुर्जिल पास, बुर्जिल पास, बुर्जिल पास जम्मू कश्मीर में आता है, बुर्जिल पास एंड जोजिला पास। ला का मतलब होता है पास, तो जोजिला, बुर्जिला। ओके, एंड इन हिमाचल प्रदेश में बारालाछा, बारालाछा, शिपकिला। ओके, एंड शिपकिला काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिमला को सीधा तिब्बत से कनेक्ट करता है शिपकिला। ओके, शिपकिला, even the Satluj river comes through the Shipkila pass. Okay, and this Shipkila was also utilized for the trading between the India and the China also. Okay, तो यहाँ से बहुत ज्यादा सामान भी आता है चाइना से, है ना, बहुत सारा सामान जो होता है ना वाया शिपकिला रूट जो है वो आ जाता है। नाथुला है, शिपकिला है, दीज आर सम ऑफ द। सिक्किम का नाथुला काफी इंपॉर्टेंट है, और फिर उत्तराखंड का लिपू लेखला, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जहाँ से ट्रेड्स होते हैं। तो लिख लीजिएगा उत्तराखंड का थागला, ठागला, उत्तराखंड का ठागला, THAGLA, ठागला, लिपू लेखला, लिपू लेखला। अरे बच्चों ध्यान दे लो इधर, उत्तराखंड का है ठागला, लिपू लेखला और THAG ला, LA। ओके, और लिपू लेखला, LIPU स्पेस बार LEKH ला। और सिक्किम के भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं, दैट इंक्लूड्स नथुला, नाथुला, नथु। ओके, नाथुला, और एक है जिलीपला,
JELEP, जिलीपला। जलीपला जो है ना, कालिम्पोंग जो है ना, दार्जिलिंग के पास है, कालिम्पोंग जो है उसको तिब्बत से कनेक्ट करता है, लाहसा तक जाता है। ओके, तो यू कैन इजिली गेट कनेक्टेड टू द लाहसा थ्रू दिस जिलीपला। जिलीपला, JELEP, जिलीपला। ओके, ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं। एंड ओके, यू कैन ऑल्सो टेक दीज पासेस इन उत्तराखंड, वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में भी कुछ पासेस हैं दैट यू कैन टेक। बॉम्डिला हो गया, ओके, पासेस ऑफ द अरुणाचल प्रदेश के अंदर में बॉम्डिला हो गया, बुमला हो गया। ओके, अरुणाचल प्रदेश का भी आप लिख सकते हैं बॉम्डिला एंड बुमला, बॉम्डिला एंड बुमला, बॉम्डिला एंड बुमला, BUM ला, LA। ओके, अब इसके बाद बेटा ध्यान से पढ़ाई कर लो क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ओके, अब इसके बाद आता है ट्रांस हिमालयाज, एंड इन टर्म्स ऑफ अ ट्रांस हिमालयाज वी विल स्टार्ट। ओके, ट्रांस हिमालयाज में वी विल टेक 3 रेंजेस, दैट इज जास्कर, लद्दाख एंड कराकोरम। ओके, लद्दाख इज फाइनली कॉल्ड टू बी एज अ कैलाश रेंज इन तिब्बत। ओके, चलो आ जाओ, अब तुम्हें दिखा बताते हैं। हिमालय लिखिए, ट्रांस हिमालयाज हेडिंग डालिएगा, इट इंक्लूड्स लद्दाख, so it includes Jaskar, Ladakh and Karakoram. It stretches for a distance of about 1000 km in the east-west direction. It stretches for a distance of about 1000 km in the east-west direction. और यहां पे एलिवेशन कम हो जाती है। ओके, अगर हम इसकी बात करेंगे ना, ग्रेट हिमालयाज की बात करेंगे, तो एवरेज एलिवेशंस जो है ग्रेट हिमालयाज की काफी ज्यादा है। ओके, एंड बट इफ वी टॉक अबाउट द ट्रांस हिमालयाज, तो एवरेज एलिवेशन यहाँ पे कम है। ओके, देखिए एवरेज एलिवेशन इज 3000 मीटर एंड द विड्थ इज 40 किलोमीटर। यहाँ की एक इंपॉर्टेंट रेंज है। अच्छा, इसका कैसे सीक्वेंस लेंगे आप? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जास्कर, लद्दाख एंड कराकोरम। लिखिएगा, नांगा पर्वत is an important peak in the Jaskar range. Ladakh range in Tibet is called Kailash range. ओके, और यहां की ये हाईएस्ट पीक है कौन सी? माउंट कैलाश। हाईएस्ट पीक हियर इज माउंट कैलाश। जानते हैं ना कैलाश माउंटेन? ओके, कैलाश पर्वत। हमारे यहाँ इसकी पिलग्रिमेज भी है। ओके, लोग जाते भी हैं कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए। ओके, अब तो खैर उत्तराखंड से रूट बना दिया ना इनका, तो छोटा रूट है ये। इट इज बिलीव टू बी, नहीं, दे वुड बी क्लियरिंग दिस रूट बाय 2024। नितिन गडकरी नहीं कर देंगे, नितिन गडकरी बोल रहा है तो कर देगा, वो 2024 तक तैयार करके दे देगा। और 2024 में तो और भी बहुत सारी चीज होनी है ना, इलेक्शन भी है ना, तो उससे पहले पहले है ना, तो हो सकता है फर्स्ट ट्रैवलर हमारे मोदी जी हो टुवर्ड्स कैलाश, क्योंकि पिछली बार तो इलेक्शन के अंदर में केदारनाथ चले ही गए थे ना। ओके, सो आगे लिखो तुम लोग। नेक्स्ट क्या लिखा आप लोगों ने? माउंट कैलाश, माउंट कैलाश, ठीक है। ओके, माउंट कैलाश और कैलाश माउंटेन, एंड द रिवर इंडस ओरिजिनेट्स
from the northern slopes of the Kailash range. क्लियर है? The northernmost range of the Trans-Himalayan in India is a Great Karakoram. The northernmost range of the Trans-Himalayan range is the Great Karakoram. ठीक है? कराकोरम वर्ड आया है काला, करा. ओके, तो ब्लैक रॉक्स है वहां पे एंड इट इज बिलीव टू बी हैविंग सम वोल्केनिक ओरिजिन. ओके, और ये पूरा का पूरा द्रास का रीजन जो भी है ना, इसको भी द्रास आर्क, वोल्केनिक आर्क है पूरा ये. ओके, बिकॉज इनिशियली जब इंडियन प्लेट सबडक्ट होती है तो दोनों के ओशनिक कंपोनेंट जो होते हैं ना वो जाके सबडक्शन होते हैं, और जब ओशन ओशन कन्वर्जेंस होता है तो इनिशियली क्या बनेगा, वोल्केनिक आर्क जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है. तो राइट नाउ दीज वोल्केनिक आर्क आर द रेमिनेंट्स ऑफ दीज वोल्केनिक आर्क could be seen in the form of a Dras arc. Okay, and reason we have volcanic reason, we have a soil and the other characteristics that resembles the volcanic eruptions during the convergence of the Indian plate and the Eurasian plate. Okay, and right now we don't have any volcanic eruptions, reason being because the crustal thickness is so huge. Okay, because doubling of the crust has taken place. It is a doubling of the crust has taken place. So the crustal thickness is so huge that none of the molten material may have a capacity to reach to the surface. Okay, अगर नीचे होगा भी तो do not have the capacity to break the surface and come out. Is it clear? अरे बोलो भाई. Okay, अब आगे लिखिएगा. लिखिएगा और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. हम कराकोरम के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, कृष्णागिरी. कृष्णागिरी लिखिएगा. इट इज ऑल्सो नोन एज कृष्णागिरी रेंज. हाँ, कराकोरम को कृष्णागिरी रेंज भी कहा जाता है. कृष्णागिरी मतलब भगवान कृष्ण का पर्वत. ओके, गिरी का मतलब पर्वत होता है ना, तो दैट इज कृष्णागिरी, तो भगवान कृष्ण का पर्वत. ठीक है, दैट इज कृष्णागिरी रेंज. ओके, एंड नेक्स्ट आगे लिखिएगा. टू द ईस्ट ऑफ कराकोरम इज पामीर नॉट. पामीर नॉट. पामीर नॉट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ वेरियस सेंट्रल एशियन रेंजेस. पामीर नॉट. ओके, सो पामीर से आपको कई सारी मिलेंगी. हिंदू कुश निकलती हुई दिखाई देगी आपको. यू हैव अ कराकोरम ऑल्सो, यू हैव अ त्यानशान ऑल्सो. सो देर आर मेनी रेंजेस विच आर इमर्जिंग रेडिएटिंग फ्रॉम द पामीर नॉट. ओके, एटलस निकालो, पामीर नॉट ढूंढो, सेंट्रल एशिया का निकालो एटलस. देखो ये इस तरीके से समझ लेना. देखो ये ना फोल्डिंग का मैं तुम्हें दिखा रहा था. तुम देखो टेथिस है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में. तो पहले तो टेथिस में फोल्डिंग होती है और उसके बाद इंडियन प्लेट जो है ना उसमें भी फोल्डिंग होनी शुरू हो जाती है, उसमें भी क्रिस्टल फोल्डिंग शुरू हो जाती है. ओके, एंड इट हैज रिजल्टेड इनटू द इवोल्यूशन ऑफ द हिमालयास. Okay, this is also there. So initially there could be some volcanic eruptions that may have taken place. Indian plate ready to collide with the Eurasian plate, Tethys geosyncline, and the continental arc were formed due to volcanism. These continental arc could be seen in the form of a these continental arc initially could be seen in the form of a these Dras arc or many other things. Okay. Okay, this is also a one diagram that you can understand that the Indian plate subducted into the Eurasian plate, and there are many when the Indian plate gets subducted into the Eurasian plate, there were breaks which were created, and these breaks are the thrust zones through which the different blocks of the Himalayas are rising. Okay,
तो इसके नाम हैं अलग अलग एंड यू कैन इसके नाम में आपको जो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज बताएंगे ना तब उसके अंदर में आपको समझाएंगे. ओके, सो दिस इज हाउ अबाउट द पामीर नॉट. ओके, सो टू द टॉप कराकोरम के बिल्कुल ईस्ट में जाके, सॉरी वेस्ट में जाके आपको पामीर नॉट मिलता है. ओके, मिल गया आपको. Okay, this is the Pamir knot, and from the Pamir you can see Karakoram is rising. You have a Hindu Kush also there, and radiating in Kunlun mountains. Kunlun, Kunlun mountains. Okay, most of the part of the Kunlun mountains are in China. Okay, मिल गया. और यहीं से त्यान शान भी मिलेगा आपको, देखो मिल गया. तो बहुत सारी रेंजेस हैं जो इससे रेडिएट होती हैं. ओके, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ नॉट. लाइक फॉर एग्जांपल नीलगिरी. नीलगिरी इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ नॉट ना. Okay, in the southern India. Okay, so different ranges are rising from those. There the Nilgiri is a point where the eastern Ghats and the western Ghat tend to meet. अरे बोलो बच्चों. ओके, क्लियर है पॉइंट. आगे लिखिएगा. कराकोरम रेंज is also a home of some greatest glaciers and important peaks. और यहां की जो सबसे इंपॉर्टेंट पीक वही भारत की सबसे ऊंची पीक है. हाँ, माउंट केटू इज इंडियाज हाईएस्ट पीक. इंडियाज हाईएस्ट पीक. इंडियन यूनियन लिखना तुम लोग, इंडियन यूनियन हाईएस्ट पीक. इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है और चाइना वाले इसको कोगर बोलते हैं. कोगर, कोगर. एंड अप्रोक्सीमेट लेंथ हाइट कितनी है इसकी? 8611. ओके, दैट इज अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द. अब इसके अंदर में एक पॉइंट और है. इसके ईस्ट में आपको एक प्लेट्यू मिलेगा. दैट इज द नेम ऑफ दैट प्लेट्यू इज लद्दाख प्लेट्यू. सो लद्दाख प्लेट्यू लाइज बिटवीन द लद्दाख एंड द कराकोरम. ओके, लिखिएगा. लद्दाख प्लेट्यू, द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कराकोरम इज अ लद्दाख प्लेट्यू. देखिए, दिस प्लेट्यू रीजन कंसिस्ट ऑफ प्लेन्स, लेक्स एंड माउंटेन्स. दिस प्लेट्यू रीजन कंसिस्ट ऑफ प्लेन्स, लेक्स एंड माउंटेन्स. ओके, आगे लिखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा. ड्यू टू वेरी लिटिल रेनफॉल एंड एरिड क्लाइमेट, this region is also called cold desert, high altitude desert, high altitude desert. Okay, lakes do not have outlets. Lakes do not have outlets. Clear sky, clear sky, clear sky brings more insulation, allows more insulation, which results into evaporation from water bodies and increase in salinity, and increase in salinity, and increase in salinity. Okay, an increase in salinity. Okay, an increase in salinity. This point is clear. Now write down the next one. Purvanchal or Eastern Hills. Purvanchal or Eastern Hills. Purvanchal or Eastern Hills. लिखिएगा. These are the low hills from Namcha Barwa to Mizoram. Okay, आगे लिखिएगा. लिखिएगा. At Dihang Gorge,
एट दिहांग गॉर्ज, जहां से दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ना, ओके, दिहांग गॉर्ज, हिमालयस टेक अ साउथवर्ड बैंड and form a series of comparatively low hills which are collectively called as Purvanchal, which are collectively called as Purvanchal. Which are collectively called as Purvanchal. ओके, पूर्वांचल, कुछ लोग उसको पूर्वांचल बोलते हैं, ओके, और कुछ प्रोनाउंसिएशन में पूर्वांचल है, ओके, पूर्वांचल। देखिएगा, दीज पूर्वांचल हिल्स आर कॉन्वेक्स, क्योंकि इनका ओरिएंटेशन इस तरीके का है, सो दे आर कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द वेस्ट, दे आर कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द वेस्ट and running parallel to Indo-Myanmar border. Okay. देखिएगा, the northernmost is Patkai Bum. Okay, Patkai, Patkai Bum. The northernmost is Patkai Bum. हाँ, BUM. बॉम्ब मत लिख देना, बुम, बुम मतलब यहाँ पे माउंटेन से है, ओके, आप तुम बॉम्ब लिख दो, पटकाय बॉम्ब, ठीक है, पटकाय बुम, एंड विच इज मेड अप ऑफ, लिखिएगा, विच इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, okay, and general elevation is 2000 to 3000 meter, and general elevation is 2000 to 3000 meter. ओके, लिखिएगा, टू द साउथ ऑफ पटकाय बुम, टू द साउथ ऑफ पटकाय बुम के साउथ में एक दूसरी हिल्स आती है, दैट इज नागा हिल्स। टू द साउथ ऑफ पटकाय बुम इज अ नागा हिल्स, और यहां की जो हाईएस्ट पीक है नागा हिल्स की, दैट इज माउंट सारामती। हाईएस्ट पीक ऑफ द नागा हिल्स इज माउंट सारामती, सारामती, ओके। An important point here is that Patkaibum and Saramati acts as a water divide between the India and Myanmar. Okay, लिखिएगा, दे लिखिएगा, Patkaibum and Naga Hills. Patkaibum and Naga Hills acts as a watershed between India and Myanmar. लिखिएगा, south of Naga Hills is a Mizo Hills. ओके, सॉरी, नागा हिल्स के साउथ में मणिपुर हिल्स आएगा, सॉरी, टू द साउथ ऑफ द नागा हिल्स इज अ मणिपुर हिल्स, ओके, और यहां पे एलिवेशन कम हो जाता है, द एलिवेशन इज लेस, ओके, द एलिवेशन हियर इज अराउंड 2500 meters, ओके। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स के बीच में एक रेंज आती है जिसका नाम है ब्रेल रेंज, बेरेल रेंज, ओके, लिखिएगा, बेरेल रेंज, BARAIL, बेरेल रेंज lies between Naga and Manipur hills. ओके,
और बरेल रेंज के साउथ में अगर हम चले जाते हैं देन इट कम्स टू बी गारो हिल्स, खासे हिल्स एंड जैंतिया हिल्स। 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 ओके, बरेल रेंज के इसमें ध्यान रखना, गारो, खासी एंड जैंतिया आर नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयन ओरिजिन। They are not associated, even the Braille range, are not associated with the Himalayan orogeny because they are the part of peninsular India. Okay, they are the part of ancient landmass. Is it clear? So, Garo, Jaintia, and this one, Khasi Hills, they are not the part of Himalayan orogeny. Okay, आगे लिखिएगा and आगे लिखिएगा. South of the Manipur Hills, south of the Manipur Hills is south of the Manipur Hills is Mizo Hills. और मिजो हिल्स के लिए वी यूज अनदर पॉइंट, अनदर वर्ड फॉर द मिजो हिल्स इज लुशाई, लुशाई हिल्स, लुशाई हिल्स. ओके, अनदर वर्ड दैट वी यूज फॉर द मणिपुर हिल्स इज द लुशाई हिल्स, लुशाई. दिस पॉइंट इज क्लियर? कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल? ओके, एंड द एलिवेशन हियर इज 1500 मीटर. Elevation here is 1500 meters. This point is clear? Okay, 1500 meter, and the highest peak is, and the highest peak is and the highest peak is Blue Mountain, and the highest peak is Blue Mountain. Okay, okay. अब तुम्हें जम्मू कश्मीर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है जम्मू कश्मीर का रीजन के अंदर में, जिसका नाम है करेवा डिपॉजिट्स. हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड करेवा? केसर सुना है तुम लोगों ने? कश्मीर का केसर नाम सुना है? कहवा नाम सुना है? कहवा, ठीक है. तो वहां पे केसर की चाय भी बनती है और वहां की एक अलग स्पेशल टी भी है, दैट इज जनरली कॉल्ड टू बी एज अ कहवा. कहा, वैसे वाह हम लगा देते हैं क्योंकि बहुत, हाँ, तो उसको वाह बोल देते हैं. तो दैट इज, अदरवाइज इट इज द सिंपल वर्ड इज कहा. ओके, सो हाँ, कहा वाह, ठीक है, तो कहा. ओके, so this all this kesar or a saffron is grown in a very specific region of the valley regions of the Jammu Kashmir and some regions of the, in the Kashmir valley region and some regions of the Jammu also. Okay, now the important point here is that there is a lacustrine deposits in those regions. Lacustrine deposits, lacustrine. Now what are the lacustrine deposits? Now these are the deposits which are in the lakes. These are the deposits into the lake because it is believed that this region was under the water. Okay, there could be glacial lake or the melting of the glaciers tend to take place in these regions, and there was a lake. This region was surrounded by a lake. Okay, now what happened whenever the glaciers or the river comes to this region, they tend to deposit their material, or it's just like a formation of a delta. So they tend to deposit their sediments in the nearby regions. So as a result, the glaciers or the valley regions, sorry, the lake region is surrounded by a mounds of deposits, and these mounds of the deposits are called to be as a kareva, and which mainly consist of conglomerates. ओके, नाउअडेज करेवास को काट के इनको काट के ना, इनको फिर सड़कें भी बनाई गई हैं, एंड दीज करेवास आर आल्सो यूटिलाइज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ saffron. ओके, देखिएगा, दीज आर द lacustrine deposits in the valley of Kashmir.
bordering the Kashmir Valley, bordering it in the valley of Kashmir, bordering it from all the sides. देखिएगा, during Pleistocene period, now we will come back to the Pleistocene. देख लेते हैं एक बार Pleistocene कहाँ है हमारा. During the Pleistocene period, okay, during the Pleistocene, okay, so you can see about the Pleistocene. This is the Pleistocene, okay, so you can say about the Pleistocene. During the Pleistocene period, around 1 million आप मान लो, okay. During the Pleistocene period, the entire valley of Kashmir was under the water. Okay, due to the melting of the glaciers. इसको प्लिस्टोसीन आइस एज भी कहा जाता है. ओके, ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स. देखिएगा, ड्यू टू द टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट, ड्यू टू द टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट, बारामूला गॉर्ज, वेरी इंपॉर्टेंट बारामूला गॉर्ज है ना, बारामूला गॉर्ज was created. Baramulla Gorge was created, okay, by the movement of the water and the upliftment of a land. Baramulla Gorge was created, okay, which drained the entire valley, which drained the entire lake, sorry, which drained the entire lake, and the deposits of the lake left behind, and the deposits of the lake left behind, and the deposits of the lake left behind are known as karevas. देखिएगा, at many places they are eroded by fluvial action, and giving them a present position. देखिएगा, these karevas are important for orchard farming. These karevas are important for orchard farming, which includes apples, plums, almond, okay, saffron, okay, and a good source of income in this region. Okay, is it clear? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल दीजिएगा इसके अंदर में, मैं आपको बता रहा हूं. ओके, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन ही पूछता हूं कि व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ अ स्नो लाइन ऑन द वेस्टर्न हिमालयाज एंड ऑन द ईस्टर्न हिमालयाज. Do you find any differences of the snow line from the western and central Himalayas, from the eastern and central Himalayas and in the western Himalayas? Yes, there is a difference. Okay. Now, the snow line in the Arunachal Pradesh or into the Nepal or in some part of the Uttarakhand also, you will find that the snow line is around 3500 meter. Okay. Now, snow line is a place above which you have a perpetual snow. This point is clear. So, the snow line in the central part or in the eastern part of the Himalayas is relatively at around 3500 meters, okay, nearing around 3500 meters, okay. But the snow line on the western part of the Himalayas would be
nearing around that will be nearing around at a relatively lesser height. लिखिएगा इस चीज को. The Eastern Himalayas and Western Himalayas in Eastern Himalayas and Kumaon Himalayas, not Western Himalayas, and Kumaon Himalayas is at a height of 3,500 meter. Whereas the snow line is about 2,500 meter in the Western Himalayas. Mainly due to difference of latitude, because ये lower latitude पर है, okay? Lower latitude पर है, because due to the difference of latitudes and also a difference of precipitation. ओके अब एक चीज का ध्यान रखना, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. इन ऑल अगर हम देखें तो वेस्टर्न हिमालयाज की जो स्नो लाइन है वो नीचे है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न हिमालयाज, लेकिन एक डिफरेंस और आपको मिलेगा ऑन द सदर्न स्लोप एंड ऑन द नॉर्दर्न स्लोप. ओके, तो स्नो लाइन ऑन द सदर्न स्लोप इज रिलेटिवली at a lower level, at a low elevation. Why? Because the precipitation is good. Okay, and mainly you will find that precipitation is good, so therefore there will be that will be at a low level, and on the northern slope the snow line is found to be at a higher level. Likhega, there is also a difference of a snow line at the northern and southern slopes. At the northern and southern slopes, likhega, the northern slopes are at the northern slopes are at the northern slopes are at northern slopes are having a snow line at low level, whereas southern slopes, उल्टा करवा दिया तुम लोगों ने, उल्टा हो गया, हाँ भी उल्टा हो गया, दोबारा लिखो तुम लोग इसे, इस लाइन को लिखिएगा, द सदर्न स्लोप्स, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, द सदर्न स्लोप, हाँ तुम टोक सकते थे ना, अभी तो मैंने तुम्हें समझाया था ना पूरी बात, तो लिखो द सदर्न स्लोप्स, एट द सदर्न स्लोप द स्नो लाइन इज एट लो लेवल और एट लो एलिवेशन. हाँ, whereas on the northern slope the snow line is at higher elevation. The snow line is at higher elevation. The snow line is at higher elevation. Okay, और रीजन क्या है इसका मानस? What is the reason? Because precipitation. Okay, रीजन लिखिएगा, the reason is, पहला रीजन, first reason, write down, steeper southern slopes, steeper southern slopes which receives more precipitation as compared to northern slopes, which receives more precipitation as compared to northern slopes, which receives more precipitation as compared to northern slope. Okay, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों के पास इंडियन ज्योग्राफी की कौन सी किताब है? हैं? एनसीईआरटी है आप लोगों के पास, तो आप माजिद हुसैन वाली खरीद लीजिएगा एक.
इंडियन ज्योग्राफी माजिद हुसैन जो है ना। अगर नहीं खरीदने का मन है तो बात अलग है, अगर खरीद लोगे तो शायद साथ साथ चलेंगे हम लोग और सही से पढ़ाई कर लेंगे। ओके, अगर आपको लेनी है तो आप ले लो उससे इंडियन ज्योग्राफी के लिए। ओके, खुल्लड़ की किताब में फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, ऑप्शनल के लिए सही रहेगी खुल्लड़ की किताब। तुम्हारी ग्रेजुएशन में कौन सी चलती है? खुल्लड़ ही चलती है? अच्छा, उनकी अपनी भी आती हैं? अमेज़न पे बोल देते होंगे, अमेज़न से खरीद लो। कौन से टीचर हैं? नाम तो, बुक का नाम बताओ कोई, अच्छी किताब हो तो। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। जितेंद्र सरोहा? और जितेंद्र सरोहा की तो पियर्सन से आती हैं सारी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। जितेंद्र सरोहा इज़ गुड। मैंने तो उनके साथ पढ़ा है चाणक्य में। ठीक है, जितेंद्र सोहा सुरेंद्र सरोहा और जितेंद्र सरोहा, दोनों ब्रदर है ना। तुम्हारे अंबेडकर कॉलेज में जितेंद्र सरोहा भी हैं, वो भी पढ़ाते हैं? ओके, पहले कोऑर्डिनेटर थे यूजीसी के वो। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। कल हम लोग जो ये फिजियोग्राफ, ये वाला पार्ट हमारा फिजियोग्राफी का वाला पहले कंप्लीट हो जाए, नॉर्दर्न माउंटेन सिस्टम हमारा हो गया है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेन्स, प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर द प्लेन्स वी विल डिस्कस अबाउट प्लेट्यूज, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द कोस्टल एरियाज। और फिर तो इसमें 1-2 दिन लगेंगे। कल हम प्लेन्स और प्लेट्यूज कंप्लीट कर देंगे। विल कंप्लीट प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। ओके।